Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 73 for what topic? Sexual reproduction in flowering plants. Now after learning the structure of the male and female reproductive whorls of the flower, we have started one of the very important article, that is pollination. It is totally a theoretical article as such and that concept based. So we should have that proper understanding of that term pollination, why it is needed and not. Okay. Now what is pollination then? In the last lecture, I have given you the definition of pollination and also I have explained that need of pollination there. So pollination is defined as the transfer of pollen grains shed from anthers to the stigma of pistil. Okay. Transfer of pollen grains shed from anthers to the stigma of pistil is termed as pollination. बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है और अगर नीट को क्रैक करना है तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हमें याद रहनी चाहिए, इसलिए मैंने लिख के दिया है. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स शेड फ्रॉम एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर और स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल is called as or termed as pollination. Very simple. And it is rightly called as the marriage of the flower. Because without that pollination, the male gamete and female gamete cannot come closer. Male और female gamete एक दूसरे के नजदीक आ ही नहीं सकेंगे अगर ये इवेंट यानी मैरिज नहीं हो जाएगा तो. Okay. Then we have to learn the types of pollination. So without pollination, fertilization is not possible, that we know. अब ये पॉलिनेशन के टाइप्स जो है वो अकॉर्डिंग टू दैट ओल्ड और पर्टिकुलरली दैट प्राइमरी लेवल लर्निंग, यू हैव स्टडीड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. तो इसको मैं यहाँ पे इग्नोर नहीं कर रहा हूँ. दैट टू टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन आर देयर, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, नो डाउट. बट अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई और एनसीईआरटी बुक वी आर गोइंग, and that is given there that there are three types of pollination, which are that one is known as autogamy, other is known as geitonogamy and third is known as xenogamy. इसमें गैमस ये जो वर्ड है उसका मतलब है मैरिज. सो ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी एंड xenogamy. तो हम जब लर्न करेंगे तो आपको समझ में आएगा. Autogamy and geitonogamy are the types of self-pollination. Okay. And that xenogamy is the perfect cross-pollination. उसके साथ साथ और भी एक टाइप मैं आपको बोलूंगा उसका क्रॉस पॉलिनेशन का, हाइब्रिडाइजेशन, जो आजकल बहुत ही बड़े लेवल पे चलता है. ओके, वेरी सिंपल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोगैमी एंड गैइटोनोगैमी? ट्राई टू लर्न. Autogamy means same, and that auto means same and gamous means marriage or fusion. That whenever the flower is bisexual, having both the sex organs together, and whenever they are exposed to the same level at the same time they are matured, then there is a chance that the pollen grain from that anther will get deposited onto the stigma of the same flower. So that means whenever the pollination occurs within the same flower, एक ही फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन हो जाता है, यानी डायग्रामेटिकली आई विल शो यू हियर. सपोज दैट दिस इज द फ्लावर. डायग्रामेटिकली मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा फ्लावर नहीं बता रहा. तो यहाँ पे ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है. ओके. और सपोज दैट दिस इज दैट पर्टिकुलरली एंथर. तो ये दोनों भी एक ही साथ बड़े हो गए हैं, दोनों एक ही फ्लावर में है. दैट मीन्स इट इज बाइसेक्सुअल एंड नाउ बोथ आर एक्सपोज टू द सेम लेवल एट द सेम टाइम दे आर मैच्योर्ड आल्सो. ओके. तो ऑटोमेटिकली यहां से जो निकलने वाला पोलन ग्रेन है वो पहले तो इसी स्टिग्मा पे जाके गिर सकता है, isn't it? There are many chances, almost maximum chances, that pollen grains shed from the anther will go to the stigma of the same flower.
और पॉलिनेशन हो गया. Okay, so that destination is reached, pollination is successful. So this type of pollination which occurs within the same flower, transfer of pollen grains shed from the anthers to the stigma of same flower, same, is known as autogamy. Auto का मतलब जानते हैं हम, self. Okay, वहां के वहां ये हो गया वो. So the example of this is the pea plant, viola plant, oxalis plant, camelina plant. बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, आप ध्यान में रखो. pea, viola यानी common pansy, then that another is that oxalis and camelina. Okay, अब ये जो है oxalis and camelina, इसमें हम बात करेंगे दो टाइप के फ्लावर. This particular oxalis camelina, they have got two types of flowers. एक तो open flowers. One is known as open flower, or they are known as chesmogamous flowers. That is called chesmogamous flower. Okay? Chesmogamous flowers are normal open flowers. And other is known as closed flowers. तो ये जो closed flowers होते हैं उन्हें कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. ध्यान में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है. Two types of the flowers are produced there by oxalis or that viola camelina. One is known as the open flowers or chesmogamous flowers, जो नॉर्मल फ्लावर की तरह है. एंड द अदर इज नोन एज द क्लोज्ड फ्लावर्स और व्हाट इज से दैट क्लिस्टोगैमस फ्लावर. जस्ट आई वुड लाइक टू शो द दैट पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी देयर. ओके, अब इसमें क्या होता है देखो, चेस्मोगैमस फ्लावर, कुछ फ्लावर जो इसके होते हैं, जस्ट डायग्रामेटिक आई एम शोइंग दैट पर्टिकुलरली दैट हियर द फ्लावर्स आर प्रोड्यूस, that leaves are there and so on, and the normal flower is also there. Okay, तो यहाँ पे जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है? नॉर्मल फ्लावर होता है, नॉर्मल फ्लावर के जैसा ओपन फ्लावर जिसको हम कहेंगे. सो ये ओपन फ्लावर है. ओके, दिस इज नोन एज चेस्मोगैमस फ्लावर. And here the male and female organs get matured at the same time. एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं और एक दूसरे के नजदीक होते हैं, तो ऑब्वियसली द चांसेस आर देयर, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इजंट इट. एंड देन अनदर इज देयर. ऐसे तो ओपन फ्लावर रहेंगे. अब जो देखो पर्टिकुलरली कुछ ब्रांचेस जो है वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं. सम ऑफ द ब्रांचेस दे गो डाउन, एंड नाउ व्हाट हैपन देयर, दे डेवलप सम फ्लावर. अब ये कुछ फ्लावर्स बनाते हैं, ये फ्लावर्स पर्टिकुलरली. ओके, सो दीज फ्लावर्स आर क्लोज्ड फ्लावर्स एंड दे आर नोन एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. ये क्लोज्ड फ्लावर्स जो है उनको नाम दिया है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. कॉमेलिना एंड व्हाट इज दैट ऑक्सैलिस वगैरह, इनमें ये दो टाइप के फ्लावर दिखेंगे. सो ऑलवेज द क्वेश्चन इज आस्क्ड देयर. तो क्या हो जाएगा, चलो बोलो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों भी इसमें, इन केस ऑफ द होमोगैमस particularly that chesmogamous flowers, when the open flowers are there and they that were containing both the sex organ, male sex organ and female sex organ, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया दोनों sex organs है, and they are getting exposed at same level at same time they are maturing. So obviously the transfer of pollen grain would take place from anther to the stigma of the same flower. So there are chances of that pollination. And what are that pollination? Autogamy, self-pollination within same flower in chesmogamous flower. But some of the time that may also get failed. पर दूसरा जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, that क्लिस्टोगैमस flowers have 100% possibility of self-pollination or autogamy. दूसरा वहां पे रास्ता ही नहीं है. दैट जस्ट इमेजिन, यहाँ पे
क्या हो गया है, द फ्लावर इज इन बड कंडीशन, ये ऐसा बड कंडीशन में है, फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा है. ओके, सो वो भी अंडरग्राउंड है. तो बाहर से आने वाला पोलन ग्रेन अंदर आ सकता है क्या? that pollen grain shed by other flower of the same type, will it be possible? यहाँ पे तो ओपन में तो भी पॉसिबल है, समझो नजदीक में कोई और होगा, then that may shade that particular flower there, that pollen grains there on the other flower. पर यहाँ पे entry of foreign pollen grain is not possible. और ये दोनों सेक्स ऑर्गन अंदर है ना, हम तुम एक कमरे में बंद हो, isn't it? यानी मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशम इज देयर, gynosham is there, they are maturing at the same time. So chances of deposition of pollen grain onto the stigma of the same flower within same flower are maximum, and that's why clistogamous flowers are invariably or 100% autogamous, that they are 100% autogamous. ये ऑटोगैमी 100% पॉसिबल है क्लिस्टोगैमी फ्लावर में. ये अगर समझो आ गया कभी हमें नीट में एमसीक्यू, इन विच टाइप ऑफ द फ्लावर्स ऑटोगैमी इज 100% पॉसिबल, कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो वो है क्लिस्टोगैमी. तो ये पहला टाइप मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे ऑटोगैमी का. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लर्न करेंगे गाइटोनोगैमी एंड देन द जीनोगैमी. वो भी बहुत सिंपल है. ओके, गाइटोनोगैमी एंड जीनोगैमी. सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ व्हाट इज दैट ऑटोगैमी and that two types of the flower, chasmogamous and the clistogamous, and with example. Do remember the examples because they are always asked in the examination. Pea plant, oxalis, viola, common pansy that is called, and commelina are the examples of that autogamy. Okay, तो बाकी के टाइप्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लर्न करेंगे. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके.